Hello everyone, I'm Hasnain Patel, final year Mbbs from Vadodara, Gujarat. Today we're going to start the second portion of our subject forensic medicine, that is toxicology. So before I start, let me just give you an overview. Toxicology portion, weightage wise, it is around 40 to 50% in university examination, and content is really less compared to forensic medicine. So if you're preparing for your university examination, start with toxicology so you can gain more marks in short duration. So let's start without wasting any time. So what आज हम क्या नया सीखने वाले हैं? So today we are going to learn the basic definition. Toxicology है क्या? Toxinology क्या है? Poison किसको बोलते हैं? We are going to learn the basic definition. Then we are going to understand the nature of poisoning. So in nature of poisoning we will learn about ideal, suicidal and homicidal poisoning. Then we are going to classify poison in a various category and various group. Then we also going to learn on which factor the action of poison depends. Then we are going to understand the diagnosis of poison in living as well as in dead. So let's start with the basic definition. Toxicology. What is toxicology? है क्या ये? In a simple word, in just one line I can say it is the study of poison, but in a definition it's a science dealing with property, action, fatal dose, detection, estimation and treatment of poison plus interpretation of the FSL report. Yani everything regarding poison, it's under toxicology. So it's a study of poison. So now question comes in our mind, poison क्या है? What is poison? So poison is a substance in any form, liquid, solid, gas, which if introduced in a living body or brought in contact with any part thereof will produce ill health. यानी कोई भी चीज़ कोई भी फॉर्म में हेल्थ खराब करे, that is poison. So now we're going to learn about forensic toxicology. Similar to forensic medicine, forensic toxicology deals with the legal aspect of harmful effect of chemicals on human body. Now question comes, what is clinical toxicology? हमने toxicology देख लिया. Now clinical mostly based on the disease, यानी harmful chemical की वजह से जो disease हो रही है we learn under the clinical toxicology. ये सारी definition exam point of view से बहुत important है, because in Viva as well they will ask you the basic definition and you must be thorough through this definition by heart. And now comes toxinology. Look, I have highlighted N over here. Toxinology and toxicology both are different. Toxinology deals with the toxin that is produced by living organism that are harmful to on human body. यानी ये टॉक्सिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनाया हुआ है जो हार्मफुल होगा ह्यूमन बॉडी, दैट विल बी कम अंडर टॉक्सिनोलॉजी. फॉर एग्जांपल स्नेक वेनम, प्लांट पॉइजन, रेस्पिरेटोरियस, एवरीथिंग कम्स अंडर टॉक्सिनोलॉजी. This was basic definition. Now let us go through a little bit history. So this scientist, his name is Paracelsus. He is also known as the father of toxicology. He said sola dosis facit venenum. प्रोनाउंसिएशन भी हार्ड है, एग्जाम में कोई पूछने नहीं वाला, वाइवा में भी कोई कुछ नहीं पूछने वाला. दिस इज जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए. सो इन्होंने बोला है डोज मेक्स द पॉइजन, यानी सब कुछ पॉइजन है, जस्ट डिपेंड ऑन द डोज. नाउ हाउ वी गोना डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रग एंड पॉइजन? दोनों केमिकल्स हैं, हाउ वी डिफरेंशिएट देम? So those drugs are given in a low dose and the intention is to heal, and poison this opposite है, given in the high dose and intention is to harm. So now we are going to learn nature of poisoning. हमने definition देख लिया, toxicology क्या है, toxinology क्या है, poison क्या है. So क्या क्या हमने देखा? Focus on me. Toxicology, study of poison. पॉइजन क्या है? कोई भी चीज़ जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब हो. टॉक्सिनोलॉजी क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिन बनाते हैं वो. नाउ नेचर ऑफ पॉइजन.
नेचर ऑफ पॉइजन हम दो अलग अलग सीखेंगे, एक तो हम आइडियल होमिसाइडल देखेंगे एंड आइडियल सुसाइडल देखेंगे. एज अ डॉक्टर वी आर सपोज टू बी एक्सपर्ट एंड वी हैव टू थिंक as what are criminal things as well, like because we have to give our opinion. अगर पॉइजनिंग का केस हुआ है, ये सुसाइडल है या होमिसाइडल है, that opinion is based on doctors, so that plays very vital role in a court hearing, so we must be thorough through this. So I tell homicidal poisoning, if someone want to kill someone, what kind of poison he should have. So the poison should be cheap, easily available, colorless, odorless, tasteless. क्यों? Because it can be mixed into any food article or any medicine and drink, and it should not produce any obvious change. Like कोई poison है जिसको ड्रिंक में मिक्स करने से ड्रिंक का कलर चेंज हो रहा है, जो विक्टिम है उसको पता चल जाएगा. So it should not have any obvious change to prevent suspicion. And signs and symptoms should resemble natural disease. So natural disease की तरह होगा, so suspicion नहीं होगा कि ये किसी ने poisoning दी हुई है. And ill health should be delayed sufficiently long enough for accused to escape suspicion. यानी किसी criminal ने poison दिया victim को and वो घर चला गया, बाद में effect आए, so he won't be under the suspicion. And then there should not be any antidote, it should be highly toxic because इनका intention क्या है, to kill. And there should not be should be any postmortem changes. So from जो ideal हमारी natural जो process होती है उसके similar होना चाहिए, changes नहीं होने चाहिए. And it should not be detected by the chemical test or other method and must be rapidly destroyed and undetectable in the body. So these are the criteria of the ideal homicidal poisoning. So as a doctor we must have we have to give opinion and we must go through this कि like homicidal poisoning कैसी होती है. And now we're going to learn about the ideal suicidal poisoning. देखो की पॉइंट इसके अंदर क्या क्या होने चाहिए. होमिसाइडल की बात कर रहा हूँ मैं. होमिसाइडल में की पॉइंट याद रखना. एक तो देखो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस. कलरलेस, ऑर्डर, टेस्टलेस वाला. देन इजीली एडमिनिस्ट्रेबल वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है. एंड इल हेल्थ शुड बी डिलेड सफिशिएंटली इनफ. ये एग्जामिनर क्या सोचते हैं, ये 4 पॉइंट इसको मिल जाएंगे, ये मार्क्स दे देंगे. सो ये दिस आर द की पॉइंट. यू मस्ट मेंशन दिस 3-4 पॉइंट्स इन योर एग्जामिनेशन आंसर. देन नाउ आइडियल सुसाइडल पॉइजनिंग. इसके अंदर भी हम की पॉइंट देखेंगे, क्या क्या की पॉइंट है. देखो चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हाईली टॉक्सिक होना चाहिए, टेस्टलेस. देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट इसमें. इट शुड बी टेस्टलेस और प्लीजेंट टू टेस्ट. कड़वा जहर खा के कौन मरने का सोचेगा. सो इट शुड बी tasteless and or it should be pleasant to taste. Capable of being administered into food, drink, capable of producing painless death. हाँ ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखो टेस्टलेस होना चाहिए या प्लीजेंट टू टेस्ट होना चाहिए. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, पेनलेस डेथ. एंड capable of producing painless death. Opium and barbiturates satisfy several above criteria. Organophosphorus and enrins are commonly used as a suicide poison because in our India is mostly agriculture based and organophosphorus are easily available and they are the major common suicidal poison. So हमने देख लिया homicidal कैसे होनी चाहिए, suicidal क्या होनी चाहिए. Now we are going to classify poison. So poison are classified in a various group and टॉक्सिकोलॉजी में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ईच एंड एवरी ग्रुप को हम डिटेल में देखेंगे. पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर पॉइजन, देन वी गोइंग टू लर्न अबाउट कोरोसिव, देन वी गोइंग टू लर्न अबाउट द इरिटेंट, इनऑर्गेनिक इरिटेंट, नॉन मेटालिक इरिटेंट, मेटालिक इरिटेंट, देन वी आल्सो गोइंग टू लर्न द सिस्टमिक पॉइजन. सो पॉइजन हमने डेफिनेशन देख लिया. नाउ क्लासीफाई करते हैं. सबसे पहला है कोरोसिव. देखो यहाँ पे क्या है, एक बार देख लो. पॉइजन, कोरोसिव पॉइजन, irritant and systematic. So corrosive क्या होते हैं, they will cause the erosion, necrosis of tissue.
इरिटेंट क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं यानी इन्फ्लामेशन करते हैं। अब इसको क्लासिफाई किया है नॉन इनऑर्गेनिक, नॉन मेटालिक, मेटालिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोरोसिव। कोरोसिव के अंदर सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनके एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक के लिए है हमारे पास HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के अंदर है कार्बोलिक एसिड। सो कोरोसिव, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली, मेटल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड further divided into inorganic, organic. Inorganic example HCl, HNO3, H2SO4. Then strong alkali. Strong alkali we have hydrates and carbonates of sodium, potassium and ammonia. Then we have metallic salt. Metallic salt example zinc chloride, ferric chloride, सारे एग्जाम्पल। सो कोरोसिव हमने देख लिया, कोरोसिव को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली, मेटालिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड को फर्दर डिवाइड किया हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल H2SO4, HNO3 एंड HCl, ये देख लिया। स्ट्रॉन्ग अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या है, देखो याद करो, रट्टा लगाना ही है। हाइड्रेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड अमोनिया। सो जो हाइड्रेट्स एंड कार्बोनेट हैं इनके that are comes under the strong alkali. And metallic salt के example याद रखना zinc chloride and ferric chloride. Now what irritants do? They causes the inflammation. They are divided into agriculture, inorganic, organic and mechanical. Agriculture सबसे common example OB poisoning, organophosphorus compound. Then in inorganic we are further subdivided into metallic and non-metallic. एग्जाम्पल लिखो, मेटालिक आर्सेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल लर्न दिस इन रियली डिटेल, रट्टा लगा देंगे, ऐसे सीखेंगे हम। देन वी गोइंग टू लर्न अबाउट लेड पॉइजनिंग, एग्जाम्पल लिखो। देन यू ऑल्सो हैव मर्क्यूरी पॉइजनिंग। देखो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक पूछा जाता है, लेड पूछा जाता है, मर्क्यूरी पूछा जाता है। दे आर वेरी दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। in next lecture when we study about metallic poison I will make you remember each and every poison अच्छे से. Then we have non-metallic poison. Non-metallic poison example is phosphorus. Then we also have iodine, chlorine. देखो इम्पोर्टेंट कौन कौन से, आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी एंड फॉस्फोरस, ये 4 इतने इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में ये 4 में से 1 या 2 तो आने ही वाले. देन इन ऑर्गेनिक वी विल हैव प्लांट इरिटेंट एंड एनिमल इरिटेंट. एनिमल इरिटेंट एग्जाम्पल स्नेक poisoning. Plant irritant, let me give you one example, Semicarpus anacardium. ये प्लांट है दैट कॉजेज द इन्फ्लामेशन. मैकेनिकल के अंदर आएगा, देखो एग्जाम्पल ग्लास पाउडर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. हमने क्या क्या देखा, हमने क्लासीफाई किया पॉइजन को 3 कैटेगरी में. पहले फर्स्ट आएगा कोरोसिव, सेकंड है इरिटेंट, थर्ड इज सिस्टमेटिक. हमने कोरोसिव को हमने डिवाइड किया 3 में. कौन कौन से, प्लीज रिपीट आफ्टर मी. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड कौन सा था लास्ट, मेटालिक सॉल्ट. हमने 3 देख लिया. देन उसके बाद हमने इरिटेंट देखा. इरिटेंट को हमने 4 में डिवाइड किया. फर्स्ट एग्रीकल्चर, उसके बाद ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक होगा ही, इनऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल. हमने 4 में डिवाइड किया. कोरोसिव कॉजेज द कोरोजन एंड मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन वही करते हैं, नेक्रोसिस कराते हैं. इरिटेंट कॉजेज द इन्फ्लामेशन. एंड नाउ वी विल गो विद द सिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक में हम क्या करेंगे, देखो एक पहले सेरेब्रल. सेरेब्रल के अंदर एक CNS स्टिमुलेंट है, डिप्रेसेंट होगा, एंड वी हैव डेलिरेंट. सो 3 चीज़ सिस्टमेटिक में, सेरेब्रल,
सेरेब्रल में CNS स्टिमुलेंट, CNS डिप्रेसेंट, डेलीरेंट. स्पाइनल के अंदर एग्जाम्पल है नॉक्स वोमिका एंड जेल्सिमियम. एंड नॉक्स वोमिका को दूसरा नाम है कुचिला सीड. हम नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर में जब हम आएंगे स्पाइनल पॉइजनिंग के अंदर, हम नॉक्स वोमिका अच्छे से सीखेंगे. दैन उसके बाद पेरिफेरल के अंदर क्यूरार है, कोनियम है. CVS के अंदर एकोनाइट, इवन टोबैको इसके अंदर आएगा. एस्फेक्शन के अंदर आएगा CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड पूरा क्लासिफिकेशन अभी तक का. देखो ये क्लासिफिकेशन 5 मार्क्स 10 मार्क्स में बहुत बार आया है. हमारी बात करें, हमारी प्रीलिम्स में भी आया था, हमारी इंटरनल में भी आया था, एंड इवन हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था. पॉइजनिंग वाला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन रटा होना चाहिए. सो व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, हमने पॉइजन को हमने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया. एक तो कोरोसिव, इरिटेंट, सिस्टमेटिक. कोरोसिव 3 कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग एसिड और देन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड अवर मेटालिक सॉल्ट. स्ट्रॉन्ग एसिड को फिर से सब थ्री में डिवाइड किया था हमने. कौन कौन से याद करो, हमने कौन कौन से याद किए थे? एक तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड कौन सा था, मुझे भी देख लेने दो. सो इट वाज मेटालिक सॉल्ट. कोरोसिव को 3 में क्लासीफाई किया था. उसके बाद इनऑर्गेनिक हमने देखा, इनऑर्गेनिक में हमने एग्रीकल्चर देखा, इनऑर्गेनिक बाद में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक देखा एंड मैकेनिकल. सिस्टमेटिक के अंदर हमने सेरेब्रल देखा, सेरेब्रल CNS स्टिमुलेंट्स, CNS डिप्रेसेंट, डेलीरेंट. स्पाइनल पॉइजनिंग के अंदर नॉक्स वोमिका, जेल्सिमियन एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एज वेल. CNS डिप्रेसेंट के अंदर आएगा एग्जांपल अल्कोहल. डेलीरेंट के अंदर धतूरा. CNS स्टिमुलेंट के अंदर आएगा कोकेन. सो दिस आर एग्जांपल. हम ईच एंड एवरी कैटेगरी को हम सीखेंगे. देखो क्लासिफिकेशन वाला फिर से एक बार देख लो, कोरोसिव, इरिटेंट, सिस्टमेटिक. वाई आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम आगे सीखेंगे ना कि कौन सा क्लासिफिकेशन में कौन सा हम सीखने वाले हैं. सो ये दैट्स व्हाई आई रिपीटेड 3 टाइम्स और 4 टाइम्स. सो नाउ क्वेश्चन आ रहा है इसके, कौन सी पॉइजनिंग से प्यूट्रिफेक्शन डिले होगा. सो द पॉइजन विच डिलेज द प्यूट्रिफेक्शन. सो if there is a poison which delaying the putrefaction, वो easily detect हो जाएगा and that won't be ideal homicidal poisoning. So relate everything. So example of this will be heavy metal, carbolic acid and zinc chloride. Now if a poison is delaying putrefaction, there might be some poison which are hastening the putrefaction. So there are some poison which hasten the putrefaction, and there will be like chronic, example chronic alcoholism, hydrogen sulfide. So delay putrefaction, heavy metal, carbolic acid, zinc chloride. Hasten the putrefaction will be chronic alcoholism and zinc chloride. So I hope you understand so far. And poison which get destroyed by putrefaction, example are aconite and morphine. So if there is a poison which are getting destroyed by putrefaction, there might be some poison which are not getting, which are resistant to putrefaction. So what are those? So we have carbolic acid, no sorry, we have corrosive, we have barbiturates, we have organophosphorus compound, we have cyanide and datura. So this poison can be detected even after the late stage of putrefaction. So we have learned about the poison which delays the putrefaction, we have learned about the poison which hastens the putrefaction,
poison which get destroyed by the putrefaction and which resist the putrefaction. प्लीज़ अच्छे से ये याद रखना ये वाले, कि इसमें से वाइवा में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे एंड एग्जाम में भी आएंगे. Now we're going to learn the action of poison. Action of poison can be local, it could be remote or combined. I'll explain you this with an example. अगर corrosive poisoning हो रहा है, यानी कोई एसिड की poisoning हुई है, so area at which the acid has fallen, that will get that will have coagulative necrosis, and that will cause the local action. So destruction says congestion or coagulation. So locally जो action कर रहा है, that could be the one action. Remote यानी कोई poison की वजह से severe pain हो रहा है, that can lead the patient to go into shock, for example shock. And if there is a local action as well as a remote, that will be come under the combined. Causes modifying the action of poison, यानी किन किन चीज़ों की वजह से poisoning के effect change हो सकते हैं. First will be the, let me make a black color. देखो quantity, ज़्यादा quantity होगी more toxic effect आएंगे. Second will be the physical state. So action of poison कैसे होगा, गैसेस सबसे जल्दी आएंगे, उसके बाद लिक्विड का एक्शन, उसके बाद सॉलिड. थर्ड फैक्टर होगा केमिकल कॉम्बिनेशन. एग्जाम्पल इन दिस, देखो सिल्वर नाइट्रेट, देखो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग पॉइजन है. बट जब ये कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, एंड सिल्वर क्लोराइड इज हार्मलेस मेटालिक सॉल्ट. सो ये केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर सिल्वर नाइट्रेट अलग से दे रहे, that will be very toxic. If HCl is given, that is also very toxic. But when they both are combined, that causes that they form the salt, metallic salt, that is silver chloride, and that is not toxic. So on this factor also it depends. Fourth is the mechanical combination. For example, if one drop of concentrated HCl is administered, that causes a really severe toxic effect, but that one drop is diluted into 10 liters, toxic effect will be less. So mechanical combination, when toxic substance plus inert solution or substance mix, toxicity decreases. Fifth is the mode of administration. So IV होगा तो that will be very fast action आ जाएगा. Then if we give intramuscular or introduce in the stomach, like depending on the कौन से मोड से एडमिनिस्टर कर रहे हो, IV में सबसे फास्ट आ जाएगा, ये याद रखना. Then habit की वजह से, and some people have a habit to consume alcohol, and if the same amount of alcohol in a given in a habit person, like जिसको आदत है and another person जिसको आदत नहीं है, so toxic effect will be more in a like जो new drinker है. So just for an example, habit also plays a role in action of poison.
देन हेल्थ स्टेट, हेल्दी इंडिविजुअल है उसके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट कम आएंगे कंपेयर टू समवन हु इज़ रियली सिक, सो दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल. हैबिट 7, health state. 8th is the cumulative action. Yani if a poison is given in a small dose for a long duration, so it can accumulate and cause the effect later on. So this was the causes modifying the action of poison. देखो इस पे से क्वेश्चन आते नहीं है, बट एक बार देख लेना, बहुत सिंपल चीज़ है. रेडी के अंदर प्लीज़ देख लेना एक बार. पॉइजनिंग. In first we will start with the diagnosis of poisoning in a living being. So that is not only one symptoms, there are multiple symptoms. So there is not a single symptom that is characteristic to like one poison. यानी एक symptom बहुत सारे poison कर सकते हैं. So we have a toxidrome. And toxidrome क्या होता है? It's a combination, or we can say it's the group of signs and symptoms resulting from a given poison. यानी एक बहुत सारे सिम्टम्स हैं दैट कैन गिव अ क्लिनिशियन अ क्लू इन अ करेक्ट डायग्नोसिस. उसको हम बोलते हैं टॉक्सीड्रोम. बहुत बार क्वेश्चन इसमें से आता है, देख लेना टॉक्सीड्रोम क्या है. सो बहुत सारे साइन, यानी फॉर एग्जांपल कि HCl की पॉइजनिंग है, उसके अंदर स्ट्रिक जैसे अपीयर आएंगे, दैन देयर विल बी चॉक लाइक अपीयरेंस ऑफ द टीथ. बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स की मिक्स करके एक ग्रुप बनाया हुआ है, दैट इज टॉक्सीड्रोम. एंड टॉक्सीड्रोम हमें हेल्प करता है क्लिनिशियन को डायग्नोसिस करने के लिए. देन अब देखो डायग्नोसिस करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. सो सबसे पहले सस्पिशन कब आएगा? सो सस्पिशन ऑफ पॉइजनिंग में अराइज व्हेन सडन सिम्टम्स इन लिविंग हेल्दी पर्सन के अंदर साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे तब. सिम्टम्स अपीयर शॉर्टली आफ्टर टेकिंग फूड. यूनिफॉर्म सिम्टम्स दैट रैपिडली वर्सन. Multiple individuals suffering from similar symptoms after consuming the same source. Discovery of poison in the food, vomitus or excreta as a strong evidence of poisoning. Then then symptoms indicate of poisoning: a sudden abdominal pain, nausea, vomiting, sudden coma, constricted pupil, delirium, dilated pupil, paralysis, particularly lower limb motor neuron, jaundice, liver failure, oliguria, proteinuria, hematuria, and rapid neurological and gastrointestinal illness in those exposed to chemical. So these are the signs and symptoms. So diagnosis of, let me just write and we'll go further. Diagnosis of poisoning in case of the dead. In case of the dead, we can do analysis. First we can do physical analysis, secondly we can do chemical analysis. When we open the dead body, we can perceive smell. Different poisoning have a different typical smell or odor, so we can look for the different odor. Secondly, poisoning also hinders with the normal lividity, so we can have the change in the color of the hypostasis. Third, we can look for the change in the stomach mucosa, and in chemical analysis we will send the organ to the FSL. So odor of the poisoning, in case of cyanide we will have a typical smell that is also called bitter almond smell. Bitter almond smell in case of the cyanide poisoning is not it is not perceived by everyone. It is X-linked and only few percentage of the female population can perceive the smell. In cannabis, it will produce burnt rope smell. And hydrogen sulfide, you can remember, you must have remembered this, it give rotten egg smell. In our class 11-12 chemistry, we have observed how is the hydrogen sulfide and we know how pungent it smell. Alcohol give fruity smell. Chloral hydrate give acrid pears smell. Organophosphate give kerosene like smell. Because of a compound called aromax. Phosphorus and arsenic give garlicky smell. Now color of the hypostasis. So some poisoning hinders with the normal lividity and produces different color. So in case of this carbon monoxide poison, we will have cherry red color. Cyanide will cause the brick
red / bright red color. Phosphorus poisoning will cause dark brown. Hydrogen sulfide will produce bluish green. Bromide, aniline and nitride will have the chocolate brown. Methanol will have purple hypothesis. So हमने क्या क्या देखा? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है चेरी रेड करेगा, साइनाइड है ब्रिक रेड करेगा, फॉस्फोरस डार्क ब्राउन, हाइड्रोजन सल्फाइड ब्लूइश ग्रीन, ब्रोमाइड एलिन नाइट्राइड चॉकलेट ब्राउन एंड मेथनॉल पर्पल. सो डार्क ब्राउन अपना फॉस्फोरस है, चॉकलेट ब्राउन हमारा ये तीन चीज़ से बनाई है चॉकलेट, ऐसे याद रखना, ब्रोमाइड एनिलीन नाइट्राइड बेन, चॉकलेट बेन करो BAN just for remembering. So chocolate brown, bromide, aniline nitride. Now stomach mucosa. So stomach mucosa, different poisoning causes the different change in the stomach mucosa. So first in the H2SO4 will cause the black charring. We will learn this in the corrosive poison in detail. Then HNO3 will cause the yellowish brown xanthotropic reaction भी बोलते हैं उसको. We will look for this also in our next lecture. Carbolic acid will form the leathery stomach. Arsenic poisoning will cause red velvety stomach, and sodium amytal will cause the bluish coloration in the stomach mucosa. So we have completed the physical analysis. Now we go for the chemical analysis. Before going to chemical analysis, we must know what happened to the poison once it is ingested. So once the poison is ingested, it will go in the stomach, it will get stored, then from the small intestine it will get absorbed, then it will go to liver, and the metabolism will occur in the liver, and it will excrete through kidney. So if we want to analyze के like poison कौन सी poison होगा, कहाँ पे होगा, so we will take sample. So we will take sample from this route. So from ingestion till the excretion, the route, we will take sample from each and every organ. So first we will take the blood, because in the end जो भी poison है वो blood में जाएगा. We will take the stomach, we will take entire stomach. Then we take the proximal 30 cm of small intestine. We take around 500 gram of liver, half of each kidney, दो किडनी है, दोनों का half करके एक साथ हम भेजेंगे FSL. And preservative होगा saturated solution of NaCl. And formalin is never used because it will destruct the poison. So this was basic about the general consideration of toxicology. Thank you so much for watching this lecture. In the next lecture we will continue with general consideration part 2, in which we will study the duties of a doctor in case of poisoning and antidote. This is the first video lecture on this channel. If there is any suggestion from you guys, any change you want, any topic you want to study, please let me know. I will try my best to improve each and every day. Stay curious, stay humble, keep studying. Thank you.